Mm. Mm. So, hello everyone. I'm your Sudipta ma'am, welcoming you all to Vedang Classes powered by Vedang Institute of Technology. Okay, guys? No, guys. Tell me, how are you all? Tell me. Good morning, Jairam. Good morning, Satish bhai. Good morning, Amit. Good. Good morning, ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆଜି ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ରହିଯାଇଥିଲା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହି କହି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। So good evening, guys. Good evening. So, how are you all? Eddie, कौन? अच्छा करी डीडी. Okay, everything is okay. Everything is fine. I'm also good. Okay, I'm well and good. तो तमाने भी बहुत भलरे थिबो. एग्जाम सरी आसुची. लाइक आज तो 10 तारिख ହେଲା 3 दिन पर तमानकर आरआई एग्जाम सरी जीवो. बट मु आउथरे कहबी प्रिपरेशन को केते बेले अधारे रखिबोनी. प्रिपरेशन को पूरा टफ रे ही रखिबो बिकॉज़ को मोमेंट रे किछि भी वैकेंसी आसी जीवो देन सेते बेले जीरो टू स्टार्ट करिवा टू बेटर कि जो पीक रे अच्छा से पीक रे ही चला. हैला. अमित हाँ हाँ मोर मन अच्छी कल तुम आरआई एग्जाम ऑल द वेरी बेस्ट जहाँ तो पढ़ुच जहाँ लिख मत कह कौन दरकार ओके आस. So come to the first point. Which of the following exhibition site is not a part of Diamond Triangle of Odisha archaeology? 10 तारिख तो हाँ हाँ ठीक है कह which is not पचारि आगुरु आमे करिथिले which is एटा पचारि which is not. So tell me what will be the right answer. Ratnagiri, Udayagiri, Khandagiri or the Lalitgiri? खंडगिरी आपणकर अडुआन आउट हो जिवो. अच्छा मते कहिलो आपणकर खंडगिरी हाँ मु जानिली खंडगिरी विल बी द राइट आंसर. तो रत्नगिरी आपणकर प्रेजेंट कोठी रहउची ना जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रे आपणकर प्रेजेंट रहउची एंड दिस इज अ वेरी फेमस बुद्धिस्ट कण मोनेस्टरीज और हम कहि परिबा दैट इज फेमस फॉर द महावीर जैन. तो रत्नगिरी आपणकर कोठी प्रेजेंट रहउची ना ये हमर सतीश भाई को घर पाखरे ही प्रेजेंट रहउची जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रे आपणकर प्रेजेंट रहउची. हन नै को. So Buddhist sculptures ହେଲା स्तूपस ହେଲା and the votive tablets ए सब आपनकर कोठी मिलिबो ना ए सब आपनकर रत्नगिरी रे मिलिबो जोथरे कि आपण मान जानि संदे दिस इज द सेंटर फॉर द महायान एंड द वज्रायन बुद्धिज्म 5th सेंचुरी रु 13th सेंचुरी पर्यंत आपण जदि अकाउंट करिवे ताहले महायान वज्रायन ना सुनिथिबो. बुद्धिस्ट टू टाइप्स थिले महायान एंड वज्रायन थिले. सो जो महायान बुद्धिज्म वज्रायन बुद्धिज्म एठु डेवलप हेसंती एठु डिस्टिंग्विश हेसंती. तो द महायान एंड वज्रायन भी आपण माने आ सहित रिलेट करि पारिबे. ओके क्लियर. ओके नाउ टेल मी हाँ हाँ जानिली वर्षा. अच्छा तम घर भी जाले जाजपुर हाँ जानि गली. सो मते को नाउ टेल मी अबाउट द उदयपुर. उदयपुर कोठी अछि सॉरी उदयगिरी. उदयगिरी हमरा कोठी अछि. इट आल्सो सिचुएटेड एट द जाजपुर डिस्ट्रिक्ट. दिस इज क्लोज to the Ratnagiri and Lalitgiri too. Okay, this is another significant ame kahi pariba Buddhist monastic complex and this is the excavation exposed remains as a stupa and ame kahi pariba the monasteries and the Buddhist sites too. Okay, this is also present in the Jajpur district. So out of that ame janche Khandagiri will be the eliminated one, will be the answer for the question demands. Okay.
ओके नेक्स्ट इबा सो आपनकर खंडगिरी प्रेजेंट कोड रहउची ना भुवनेश्वर रे प्रेजेंट रहउची एंड याकू आपण माने रिलेट करि परिबे कहा सहित ना उदयगिरी सहित along with the उदयगिरी caves आपनकर दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द उदयगिरी इन जाजपुर रे जो उदयगिरी केव एटा आपनकर रत्नगिरी उदयगिरी ललितगिरी आपनकर जाजपुर वाला बट खंडगिरी पाखे जो उदयगिरी अछि दिस इज नॉट दिस उदयगिरी दिस इज अ डिफरेंट उदयगिरी जोटा कि कोन जैन रॉक कट केव्स आपन कहि परिबा बिल्ट कहा पीरियड ना खारबेलक पीरियड रे फर्स्ट सेंचुरी बीसी रे तयारी हेतिला खारबेल बिलोंग्स टू व्हिच डायनेटिक खंडगिरी कहिले आपण कहबे कोठी प्रेजेंट अछि ये आपनकर भुवनेश्वर रे प्रेजेंट अछि होना नै मते को एंड की तयारी करथिले ना कहार मोनेस्टरी सब एटा आपनकर अछि ना खारबेलकर अछि खारबेलकर एठी प्रेजेंट अछि एंड ही बिलोंग्स टू द चेदी डायनेस्टी एतिकी जिंस तो कोन हैला let's see its right answer the excavation site that is not the part of the diamond triangle of the Odisha archaeology is the Khandagiri one clear okay so the diamond triangle of Odisha refers to three Buddhist archaeological sites that is the Ratnagiri Lalitgiri and Udayagiri the three are present in the Jajpur district am I clear next question jiba acha kon gote missing next question answer mate diyo quick नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर टिके दियो जल्दी कौन हबा राइट आंसर हियर ओके फर्स्ट शिफ्ट मोर अमित काली तमरा फर्स्ट शिफ्ट अछि ओके ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट तो आसो डायमंड ट्रायंगल गला एबे आसो which of the following inscription flows through on the administration of the Ashoka in Kalinga so अशोकଙ୍କ कथा जते बेले पसिला सुंदरगढ़ कहले कोन बुझिटा हमें सुंदरगढ़ कहले एठी को सुंदरगढ़ काहे के हमें कहिबा कारण ऑप्शन अछि बोथ बी एंड सी सुंदरगढ़ को हमें एलिमिनेट कर देबा that there is no major Ashokan like कोन inscription is present in the Sundargarh but हमें कहि परिबा the Sundargarh area is full of what na full of tribal and your iron ores and हमें कहि परिबा that is the minerals okay a reason सहित को रिलेट करि परिबा so right answer your comment option both B and C so see next कौन अछि ना this is the key points about the Kalinga rock edicts जोटा कि 13th रे आपनकर प्रेजेंट रहउची focus on the Kalinga war the edict primarily described the Ashoka's Kalinga war and his conversion to the Buddhist after witnessing the brutality of the conflict so 261 BC रे आपनकर जो conflict हेतिला 261 BC रे आपनकर कलिंग वार हेतिला तापरे सडन अशोकंकर कोन एते मर्मा कोन कोंती दया नदी आपनकर रक्तर नदी रे कन्वर्ट हे जाइतिला तो चारियाडे एते रक्त देखि कि तांका मन भितरे गोटे परिवर्तन सडन आसीला तो ये सब वार विषय रे एंड आफ्टर द वार से केमिति कन्वर्ट हे जंदी फ्रॉम द चंडाशोक टू द बुद्धा आपनकर कोन लाइक धर्माशोक तो ए सब विषय रे आपनकर वर्णना कर जाइछि कोथिरे ने मैम 13th रॉक एडिक्ट रे ए सब explain kara jaychi the dhamma propagation that means the inscription also emphasizes the Ashoka's efforts to spread dhamma throughout his kingdom including the Kalinga ए सब आपनकर कोठी मैम 13th रॉक एडिक्ट जोटा कि हम कहै धौली एंड बोथ द चौगड रे एक्सप्लेन करा जायछि नेक्स्ट देखिबा देखो the Khandagiri and Udayagiri caves of the Bhubaneswar are associated with which religion एबे कहिली खंडगिरी एंड उदयगिरी कहिले आपण माने कहा सहित रिलेट करिवे ना ललितगिरी रत्नगिरी उदयगिरी से उदयगिरी जाजपुर वाला उदयगिरी ये आपनकर भुवनेश्वर वाला उदयगिरी सो खंडगिरी उदयगिरी जतबे एकाठी ना दिटा जाको कहिबो ताहाले आपण माने डायरेक्टली आसत काको ना जैनिज्म को रिलेट करिवे बुद्धिज्म हेले कोन कहउची ना डायमंड ट्रायंगल को आमे इठी डायरेक्टली लेखि पारिबा बट ना डायमंड ट्रायंगल बाकी हिंदुइज्म इस्लामिज्म ये सब आपण माने जानि सुन हिंदुइज्म कहले हम कोन कहउचे ना सनातनी धर्म ताको हम कहउचे दैट इज द हिंदुइज्म हना नै को यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
So the Khandagiri and Udayagiri caves in Bhubaneswar, Odisha, India are primarily associated with the Jainism. These rock-cut caves were carved out during the reign of King Kharavela, that is 2nd century BC, and were used to residence for the Jain works, the sculptures and the inscriptions found within the caves, that is the depict the Jain mythology. That means आपणकर Jainism विषय खास करिकी खारबेला विषय से केमिति तांकर लाइक डायनास्टी को आगो को नहीं थिले फ्लोरिस्ट करिथिले तांकर डायनास्टी को तो एई सब आपनकर एक्सप्लेन करा जायछि कोठी ए सब मेंशन हेछि खंडगिरी एंड उदयगिरी am I clear next इबा also the ancient Odisha sailors were doing trade with which part of the world मते को ancient time रे what ना ancient time रे जीके जेस यूट्यूब रे हेला ना आप रे कौन एकपदीकरण हेसी कौन लेखुछ एटा मौसुमी about the batch class उत्कर्ष विषय कथा होचो कि so the ancient Odisha sailors were doing trade with which part of the world that is the China and Japan that is the Southeast Asia that is the Southwest Asia or that is the Europe what will be the right answer समस्त कौन आंसर दोचो Southeast बोली आंसर दोचो it's totally okay Parida. I can understand. So right answer कौन होची ना B that is the Southeast Asia. Okay. So the ancient Odisha, that name कौन अछि ना Kalinga that the sailors were primarily engaged in the extensive maritime trade with the Southeast Asia, including the present day countries like कौन होची ना Java होची Bali, Sumatra, Borneo, Malaysia, Thailand, Myanmar, Cambodia, and the Sri Lanka. They also had trade relations with China, Southwest Asia, and the Roman Empire. But majorly, if the question is demanding the answer about the major source, major trading co countries, then our answer should be about the Southeast Asia. Clear? बुझा पड़ुची? Very good. So कहाँ सहित ना Southeast Asia. बुझी पारछ East West North South तो Southeast आपन राशि गला. Here is your India. मने नहीं को. So एठो आपन करे maritime trade सब जाने. Clear? Next iba. Okay. Next question. मारे मोरो क्लास ना ता मनकर चैट बॉक्स में जानि पारुनी. को क्लास हेची को क्लास हेनी. Question adi focus करो. In which year Sambalpur was annexed under the Lord Dalhousie policy of the Doctrine of Lapse. So Doctrine of Lapse जेते बेले आसिला Doctrine of Lapse कथा कहूची that means आपण कनेक्ट करूछंदी कहा सहित Dalhousie सहित and एठी आपनकर मने पड़ी जाउथो कहा कथा ना झांसी रानी लक्ष्मी बाई का कथा that means झांसी कथा आपनकर मने पड़ी जाउथो जोठी के फर्स्ट टाइम पे Doctrine of Lapse यूज हेतिला लागिथिला हने नहीं yes or no yes sir okay so asa right answer was the 1847 1850 1849 or 1852 मते मसिहा लेख सब कोन ऑप्शन सी लिखि दोछ सब कोन ऑप्शन सी लिखुछ जल्दी लेख $1849 very good so right answer कौन होची that is 1849 so या विषय रे ताने जानिबा before that मते कहला 1847 आपण कर गुटे इंपोर्टेंट ईयर एग्जाम पर्सपेक्टिव रो 1847 ने कौन हेइथिला किछि मने अछि 1847 आमे कहि परिबा लास्ट चौहान रूलर संबलपुर रो in this year last आपनकर लास्ट को डायनास्टी जदि हमर रूल करछि संबलपुर आमे कहिबा that we can say that the Chauhan last king आपनकर रूल हेसी 1847 that is the last Chauhan ruler of the Sambalpur region किए थिले कहिथिली राजा नारायण सिंह किए थिले लास्ट रूलर राजा नारायण सिंह थिले जे कि लास्ट रूलर थिले अन नहीं को after that 1850 रे कोन हेसी and he also died without the higher that means without proper उत्तराधिकारी नथिला से डेट तांगर डेथ हेतिला after that तांगर Doctrine of Lapse लागिची
तो 1847 तांको डेथ हेजी 1849 तक 2 इयर्स टाइम लागि सी तांको टिके का ब्रिटिशर्स मान को टिके विद्रोह करा जाई छि तांको अगेंस्ट रे स्वर उत्तोलन करा जाई छि तापर से माने किछि न बुझी न सुनी की कोन करथिले ना डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एठी लगई थी मैम मो काली कॉल करथिली आपण रिसीव कलेनी गायत्री मु तम नंबर तो सेव करिनी ना जानिनी ना तम नंबर कोटा अदरवाइज रिसीव करि थांती बहुत सारा कॉल आछि I'm a human being, not possible to receive all the calls in a single day. But देखिबी आउ थरे कॉल करिवो will talk to you. 1850 हमें कहि परिबा कि by this time the British had already annexed the Sambalpur and it came under the direct administration also. Here हमें कहि परिबा that slightly after the actual event occurred in the 1849 after that 1850 रेटा हेतिला but exactly right answer कोन होची ना 1849. So the Doctrine of Lapse was a policy implemented by the Lord Dalhousie, the Governor General of India, where British East India Company would annex any princely state if the ruler died without a natural male heir. Sambalpur was one of the states annexed under this policy. एतिकी बुझी पारुछो एतिकी क्लियर तो आपनकर जो Doctrine of Lapse रूल टा एक्चुअली कोन थिला हाँ राइट लिसो तो Doctrine of Lapse टा कौन थी ना it was a rule it was a हमें कहि परिबा this is a कौन implementation हेतिला this was a rule or this was a policy we can say कि जदि निजर उत्तराधिकारी जन्म औरस जात उत्तराधिकारी नथिबो ताहाले आपनकर सेही डिस्ट्रिक्ट माने सेही स्टेट सेही प्रिंसली स्टेट को ऑटोमेटिकली कोन ब्रिटिश माने ताको अख्तियार को नै जिवे यू कैन नॉट अनॉय दैट और यू कैन नॉट raise your voice against that. So this is a policy, Doctrine of Lapse. So DOP one, sorry, DOL आपनकर once लागिला, that means आपनकर कोन सेही एरिया ब्रिटिश मानक अंचल को माने तांको अधिकार को पड़ेबो ब्रिटिश मानकर दखल करिबा. Yes. को केस रे जदि पुत्र संतान नथिबो निजर औरस जात संतान that means जदि झियो थिबो भी हबनी only पुओ थिबा दरकार हैना आसो. Next quote, which river was chosen as the line of demarcation between the Gajapati dynasty and Vijayanagara empire in 1513 AD? कौन लाइन थिला माने गोटे आपण कोन गजपति डायनास्टी हैला एंड विजयनगर हैला आपण माने कोठी रिलेट करि परसथि ना आंध्र प्रदेश ता एरिया पर्यंत तो गजपति रु आंध्र प्रदेश तो ए रीजन भितरे आपनकर गोटे लाइन टणा जाउची दैट लाइन को नदी को रिवर जेमिति कि मु तमन कहितिली ओडिसा एंड वेस्ट बंगाल भितरे गोटे लाइन टणा जाउची सेटा कि ना सुवर्ण रेखा. Here the question is asking about the line as a river the river as a line between the Andhra Pradesh and the Odisha. So what will be the right answer here? Yes, so very good, the right answer will be here Krishna. So the river chosen as the line of the demarcation between the Gajapati dynasty and the Vijayanagara empire in 1513 AD was the Krishna river. So here is your Vijayanagara empire. Okay, here is your like आपनकर गजपति डायनास्टी टोटल टा आपनकर here is your गजपति हैला तो गजपति आपनकर ओडिसा रीजन आसिला विजयनगर आपनकर आंध्र प्रदेश रीजन आसिला then here is your Krishna river flowing through हन नै को एठु बाहरी के आपनकर एंती जाईची तो कृष्णा रिवर आपनकर कोन as a boundary as a line टना जाईची एते कि जिंसा मन रखिबो हन नै मते को नेक्स्ट क्वेश्चन मते को जल्दी क्विक Which wildlife sanctuary is also known as Ussa sanctuary? अच्छा दीदी टा नातर अछि है ना तो प्रति शब्द भी हमें कहि परिबा राइट सो व्हाट विल बी द राइट आंसर What will be the right answer? Quick. Yes, that is the Padrama Wildlife Sanctuary. ए Padrama Wildlife Sanctuary establish केबे हेतला तमार को जते बेली Wildlife Sanctuary पढौची संगे संगे आपण मानन को रिलेट करौची का सहित ना एक्सप्लेन आपनकर एस्टैब्लिशमेंट डे सहित हना नहीं सो मते को केबे एस्टैब्लिश हेतिला 1962 रे एस्टैब्लिश हेतिला केबे 1962 रे ये एस्टैब्लिश हेसी
याको आमे आउ कोन ना उषा कोठी सेंचुरी बोली कहूचे आर जदी पचार गला कोठी आपनकर प्रेजेंट अछि ना ये हमर मैम संबलपुर रे प्रेजेंट अछि बाकी आसो गहिर मथा कथा टिके कुहो मते टिके गहिर मथा कथा कुहो गहिर मथा आपनकर को जगह रे अछि केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे एंड गहिर मथा आपनकर फेमस फॉर द ऑलिव रिडल टर्टल एटा भी आपन माने जानि सथि भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसिले दिस इज आल्सो केंद्रापड़ा रे बट भितरकनिका इज फेमस फॉर द मैंग्रोव फॉरेस्ट दैट इज द हिमताला वन एंड आमे लिटिल कोन लिटिल सुंदरबन बोली भी कहूचे काकू ना भितरकनिका को आफ्टर दैट बॉयसीपल्ली आसिला बॉयसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपनकर कोठी अछि बॉयसीपल्ली कोठी अछि ना इट वाज इन द नयागढ़ नयागढ़ ओके नयागढ़ रो लड्डू बाबा जाइछो बुली मते को नयागढ़ रो लड्डू बाबा बुली जाइछो तो लड्डू लड्डू लाल आमे कहा को कहूचे कृष्ण को कहूचे तो बंसी भी तो कृष्ण धरिबे ना सो नयागढ़ को रिलेट करबो बंसी पानी am I clear so Badroma Usakathi wildlife sanctuary located in the western Odisha taku मन रखिबो that is famous for the elephant and the leopards too next asa explanation already done you can check your the explanation the establishment day and your everything next mate kuho Usakathi sanctuary is the alternative name of the Badroma wildlife sanctuary already told you about it next which of the following rivers has got deep and narrow valleys in the middle mountainous and the highlands region of Odisha Baitarani Brahmani Mahanadi or government option quick or government option मु जानछि त माने संगे संगे government option को ही चूज करियो भाभी बारे कौन अच्छी मैम कहू ना मैम भाभी बारे कौन अच्छी बैतरणी ब्राह्मणी महानदी ए सब गोटे गोटे नदी एंड ये ही आपनकर कोन माउंटेनस रु माउंटेन रेंज रु स्टार्ट हेके आपनकर अपर हाईलैंड तक क्रिएट करंती ना आ किछि किछि रिक्वायरमेंट अछि आपनकर नो सो ड्यू टू द हार्ड रॉक स्ट्रक्चर and the steep gradient ame कहि परिबा कोन of the middle highland these rivers have the कोन एमे erosional valleys and the gondo माने form करंती okay very good next देखो so the major rivers of the Odisha including the Baitarani Brahmani and Mahanadi have got deep and narrow valley in the states middle mountainous and the highland regions next question which one of the Rusikulya plains is known as the little Sundarban कहिची बट एठी आपनकर कोन लिटिल सुंदरबन कथा पचैला क्विक जल्दी को अराबिल ट्रैक्ट कोन होउची ना अराबिल ट्रैक्ट को हमें कोन कहूचे क्विक आंसर आगे देइते तापर मु कहबी तापर सब माउंटेन ट्रैक रहउची अराबिल ट्रैक आपनकर होउची दिस इज रिलेटेड अराबिल मींस आपनकर एग्रीकल्चर रिलेटेड दैट इज रिलेटेड टू द कल्टीवेबल एग्रीकल्चरल जोन एंड आपनकर पैडी हैला वेजिटेबल कल्टीवेशन हैला ए सब सेथरे रिलेटेड तो हमें कहि परिबा कि दिस इज रिलेटेड टू व्हाट द एग्रीकल्चरल लैंड हां देन आसला कोन सब माउंटेन ट्रैक राइट आंसर हबो कि और आपनकर सॉल्ट ट्रैक कोन होची सब माउंटेन नो दिस इज द अंडुलेटिंग लैंड एंड द फॉरेस्ट लैंड जोटा को आपण माने ईस्टर्न घाट सहित रिलेट करि परिबे दिस इज द फॉरेस्ट लैंड okay the forest land or we can say this is the undulating forest land okay याको आपण माने ईस्टर्न घाट सहित रिलेट करि परिबे सो गोटी ऑप्शन रहिला दैट इज द सॉल्ट ट्रैक आसा so the salt tract of the Paradip Dhamra coast Odisha is known as the little Sundarban including the Bhitarkanika next question dekho the river E passes through the district of the river Eve passes through the districts of Sambalpur and Sundargarh, Sambalpur and Anugul, Jharsuguda and Sundargarh, or Jharsuguda and Anugul. What will be the right option? Quick. Jaldi ko. What will be the right answer? The river Eve. Origin से कोठु हेची ना छत्तीसगढ़ ओरिजिन हेची मते कुह से ओरिजिन कोठु हेची छत्तीसगढ़ दैट मींस आपनकर एंटर ओडिसा को कोठी करबो ना सुंदरगढ़ देई ओडिसा को एंटर करबो तो एठी ऑप्शन कोठी आपनकर सुंदरगढ़ अछि एई दुईटा रे त नाही तो याको एलिमिनेट करि देली रहिला संबलपुर एंड झारसुगुड़ा एंड सुंदरगढ़ रहिला आपनकर कोन झारसुगुड़ा और वेरी गुड सो option C आपनकर the Eve river flows through the district of Raigada and Jasipur in the Chhattisgarh and Jharsuguda and Sundargarh in Odisha the Eve river is a tributary of the
कहां महानदी रिवर and is joins in the Mahanadi at the Hirakud dam. So eve hela, here is your eve. Okay, then आपनकर ये रहिला month, but देखो eve आपनकर झारखंड साइड रे अछि, but here आपनकर origin हेची कोठो ना छत्तीसगढ़ बॉर्डर रो origin हेकी आसीची. So eve, month, junk, ong, hansdev, seonath, महानदी रो गोटे गोटे तेल महानदी रे सब कोन ट्रिब्यूटरी रिवर. Okay, next question देखिबा को मते which district of Odisha is the main source of teen ore. अच्छा teen ore पाई तीन हेले मो ब्रेकअप करी दउछि करी देबी. अच्छा हो रॉबिन हुड, आई एम वेटिंग फॉर योर ब्रेकअप, प्लीज सेंड मी द चॉकलेट आफ्टर दैट. ओके, टेल मी. तो ई रिवर गला सुंदरगढ़ सहित मते को which district of Odisha का सहित रिलेट करिबा. बी फॉर मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट. काई भद्रक को चूज करनो त कोथि पई भद्रक को कोथि पई नुवा, बिकॉज़ भद्रक इज अ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट एंड जेहेतु कोस्टल डिस्ट्रिक्ट आमे ताकू रिलेट करि परिबा फॉर द एग्रीकल्चर, फॉर द फिशरीज, फॉर द इंडस्ट्रीज एंड फॉर द मिनरल लाइक एंड एक्सेट्रा, बट नॉट फॉर द मिनरल रिसोर्सेस. हैला भद्रक रे किछि नाही. अच्छा एल्विस, तम घर कोठी एल्विस, तम घर पाखरे सब अछि. So right answer कौन हबो ना मालकानगिरी located the southern Odisha. तो southern Odisha the district, not only the district guys, total southern Odisha में कहि परिबा on sorry the only district of the southern Odisha that is the Malkangiri present आपनकर कोन होची ताको हमें कैसेटेराइट कहूचे और ताको हमें कोन ना टीन बोली भी कहूचे. अदरवाइज ताको हमें कोन कहूचे सी mainly known as the cassiterite is found in Malkangiri district of Odisha. This is the only district in Odisha where economically viable teen or deposits have been identified. Teen is a rare metal and etc. Clear? Next देखिबा. Next देखिबा तो very good. The famous Ghumura dance originated from which part of Odisha? Quick. अरे बाघ कोड़े जाइछि, बाघ तो कहीं क्लास को आसुनी कथा कौन कोटिके घुमुरा डांस माने गंजाम सहित रिलेट करिवो. घुमुरा सॉरी गंजाम कोन पे गंजाम सहित आपण माने एटा दासकाठिया डांस करिवे सॉरी. सो घुमुरा डांस माने आपनकर कोन आसीबो कलाहांडी रीजन. So Kalahandi and Nuapada region apanakara that symbolize the warrior culture and the musical richness of the western Odisha. So we can relate with the na Kalahandi and Nuapada region sahita. See, so the Ghumura dance is a traditional folk dance that originated in the Kalahandi district of Odisha and is also popular in the Nuapada district too, which is historical and culturally linked with the Kalahandi. And Kalahandi apanakara carved out hichi kouthu ki Kalahandi and apanakara sorry Nuapada apanakara carved out hichi ka Kalahandi too. So they are previously ancestrally samane linked heiki thile, samane connect heiki thile. Okay, Bhagachiladu acha. Oh. So when was the Chilika Lake designated as the first Indian wetland of the international importance under the Ramsar Convention? So Ramsar Convention जेतेबेले आपनकर first start हेइथिला. So मते कहिलो को मसिया रे first? Yes, परिडा पर अनेक अछंती यार आंसर देबा पई. हो. So right answer कोन हबो? Here is 1981. So Chilika Lake हमें कहउचे largest brackish water lagoon in the India was designated as the India's first Ramsar site in 1981. It was recognized under the Ramsar Convention on Wetland, जोटा कि साइन हेइतिला आपनकर केबे ना 1971 रे. ए जो फर्स्ट आपनकर इंटरनेशनल इंपोर्टेंस सॉरी रामसर कन्वेंशन आपनकर साइन केबे हेइतिला 1971 एंड यार ना कोन पई रामसर साइट केबे माइंड को आसीची रामसर साइट रामसर कन्वेंशन हमें काहे की कहउचे कारण ईरान रो गोटे सिटी होउची रामसर. तो एठी फर्स्ट टाइम पे आपनकर माइंड को आसिला कि कन्वर्स हमर कोन ना कंजर्व करके रखिबा वेटलैंड गुडा सेथि पई तार ना दिया गला रामसर. सो कोठी करा ना ईरान रो सिटी थिला रामसर. ओके, दैट इज अ इरानियन सिटी. Got my point? And in 93 was placed कोन ए रामसर साइट आपनकर कहिले ऑलरेडी हमर 1981 रे चिलिका लेक पड़िथिला एंड 1993 रे मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड रे ऐड हेतिला. एटा भी मन रखो को मसिया रे चिलिका आपनकर मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड रे
कोथिरे ना मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड रे ऐड हेथिला in 1993 after that 2002 रे से निजे ही रिमूव हे जाइथिला and आपनकर ऑथराइजिंग बॉडी एबे की ना सीटी दैट इज द चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी एतिकी जिंस मन रखिबो हैला and Chilika supports the lot of migratory birds, the dolphins, the Edwardie dolphins is famous for that, and आपन this is a endangered plant, endangered animals, so ताको आपन माने मन रखिबे, and with that is an important point आपन माने मन रखिबे, there is a कना नळबण bird sanctuary also present inside the Chilika lake. Clear? Next चला हाँ और maximum हाँ तमिलनाडु. So right, clear. 1981 आपनकर का नामसो साइट मॉन्ट्रियस रिमूवल हेतिला 2002 रे बट ऐड केबे हेतिला ना 1993 रे ऐड हेतिला. Okay, Irwadi dolphin by famous, that is the hotspot, Asia's largest practice water lake, crucial migratory bird hub, internationally lauded for the wetland restoration and the sustainable tourism practices. Okay, next question. तो बाकी कोठी कोन कोन अछि फेमस कोन वेटलैंड्स उडा ताको मने रखो जेमिति हमर भितरकनिका मैनग्रोव हेला चिलिका हेला आपण माने मन रखिचंती सेमिति आपनकर कोन ना कोलकाता रे ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स अछि देन आपनकर आसिला कोडी आंध्र प्रदेश रे आपनकर कोन कोलेरू लेक अछि सो आ ता अकॉर्डिंग आपण माने टिके मैप अकॉर्डिंग मन रखि देबे कोठी कोन अछि नेक्स्ट देखिबा आसो सो द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ओडिसा रो साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहिला या सहित मते कहबो इंडिया रा साउदर्न मोस्ट पॉइंट कोडा मन रखछ देखिबा गधसान गधिस कोन मन रखिछ गोटिए क्वेश्चन आपन को पॉइंट अकॉर्डिंग पछरे साउदर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज द मोटू विलेज ऑफ द मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट कोड रहइबो दैट इज द मोटू विलेज हैला मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट रा मोटू विलेज दैट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ ओडिशा छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश जदि पछरा गला को विलेज आपन कर तीन तीनटा डिस्ट्रिक्ट को कवर करिकि रखिछि दैट इज द छत्तीसगढ़ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश ये तीनटा जाकू को आपनकर मोटू कोन मोटू डिस्ट्रिक्ट सॉरी लाइक आपनकर कोन हां मोटू मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट रो मोटू गांडा आपनकर कनेक्ट करिकि अछि हैला हां दिस इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट द टिप ऑफ द ओडिशा में कहूचे लोकेटेड इन द बैंक ऑफ हम कहि परिबा रिवर आपनकर सबरी रिवर दैट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी रिवर सो आपनकर या पाखरी को नदी जाई छी ना सबरी नदी This is later on the tributary. कहारो ना गोदावरी. Clear? Clear? Next इबा मोटू विलेज रे कौन सबु मोटा लोक रहंती की हां हां सबु मोटा लोक रह सेथि लागि ता ना हेछि मोटू ना तो मने रखो दिस इज अ ट्राई जंक्शन एंड द कनेक्टिविटी पॉइंट कनेक्शन पोर्ट माने कम्युनिकेशन पॉइंट आपनकर ती तीनटा लाइक स्टेट को नहीं हैला चलो तो द साउदर्न मोस्ट पॉइंट आपनकर देखि पारुथबे दिस इज द पॉइंट जोडा कि मैप रे एटा आपनकर रहउची कोन ना ओडिसा रा मोटू विलेज ओके दिस इज द टोटल मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट एंड इनसाइड दैट आपनकर बॉर्डर आसी जीवो आंध्र प्रदेश नेक्स्ट आसा हाउ मेनी फिजियोग्राफिक रीजन्स इज ओडिसा डिवाइडेड ओडिसा आपनकर डिवाइड हेजी केतटा फिजियोग्राफिक डिवीजन ने मते कहिलो ओडिसा डिवाइड हेजी केतटा फिजियोग्राफिक डिवीजन ने क्विक तीनटा पांचटा कौन कहलनी सत सत कह मत तो लगुच तीनटा बोधे डिवीजन कथा कही ना जहा हो वेरी गुड तो राइट आंसर होची 5 सो ओडिशा कोस्टल प्लेन मिडिल माउंटेनस एंड द हाईलैंड रीजन्स सेंट्रल प्लेट्यू वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड एंड द मेजर फ्लोड प्लेन तो एई भलिया पांचटा लैंड रे आपनकर ओडिशा को कोन डिवाइड करा जाईची एते की जिंसा मने रहिबो ना नहीं मते कुओ नेक्स्ट मते देखो सो एमिति अपन देखले टोपोग्राफिकली डिवीजन ओडिसा रे तीनटा हेसी तो या अकॉर्डिंग अपन जानि परिबे बट एमिति जदि देखिबे माने मेजरली बट हियर देखो कोस्टल प्लेन ओके दिस इज द ओडिसा रा कोस्टल प्लेन देटा आपनकर आसीबो मिडिल माउंटेनस दिस वन इज द मिडिल माउंटेनस तापर आपनकर आसीला सेंट्रल प्लेट्यू दिस वन विल बी द सेंट्रल प्लेट्यू ओके आफ्टर दैट द साउदर्न रोलिंग ऑफ लैंड
आफ्टर दैट इटा रही गला आ कोन लास्ट मन रखियो नेक्स्ट which style of the architecture was used in the construction of the Jagannath Temple recently seen in the news quick जल्दी 16C Kalinga architecture पक्का पक्का अरे वाह वेरी गुड दैट इज द कलिंग आर्किटेक्चर अच्छा मते कहला नगर आर्किटेक्चर कहले कोन पढै थिली नगर कहले कोन बुझुछ देन बेसर कथा भी कहबो मते नगर आर्किटेक्चर कथा कुओ दैट इज एन फॉर नगर एन फॉर द नॉर्थ सो नॉर्थ इंडिया रो जतिक टेंपल आर्किटेक्चर रहूची आमे ताकू कहूचे नगर आर्किटेक्चर बेसिकली आपनकर कोन कहबा ना दैट इज द कर्विलिनियर शिखर थिबो शिखरटा केमिति थिबो ना कर्विलिनियर शिखर थिबो द स्क्वायर थिबो ग्राउंड प्लेन तांकर ओके तो ए टाइप रे हमें कहि परिबा सो दिस इज नगर इज रिलेटेड टू द नॉर्थ इंडिया देन बेसर आर्किटेक्चर कहले कोन बुझिबो बेसर आर्किटेक्चर तुमको तो एबे कहली नॉर्थ इंडिया तमे साउथ काई कहबो बेसर कहले कोन बुझिबो ना बेसर मींस कहितली मिसी मासी की बेसर बाटी दिया जाउची अन नाही सो दिस इज द हाइब्रिड फॉर्म ऑफ द नगर एंड द्राविड़ सो बेसर कहले कोन कहबो ना नगर नगर मींस नॉर्थ नगर प्लस द्राविड़ द्राविड़ मींस साउथ सो नॉर्थ प्लस साउथ मिसी की आपण हेसंती बेसर अन नाही पूरा बाटी की मिसई दिया जाइछि राइट जोटा कि आपनकर मॉडर्न कर्नाटक रे से टाइप रो मंदिर देखा से कोन गोटे थाय मंदिर कहलो होयसालेश्वर ओके दैट इज द फेमस मंदिर इन द टेंपल होयबिडु टेंपल गोटे ना हालेबिडु टेंपल एमति कोन गोटे थाय एक्जेक्टली माने पड़ो हैला सो राइट आंसर आपनकर कलिंग आर्किटेक्चर जगन्नाथपुरी टेंपल को आपण माने फॉर एग्जांपल नै पारिए छोटो कंग देबा तयारी करथिले okay so Jagannath temple was constructed using the Kalinga architecture this is a district style famous for the Odisha region which is sometimes classified as the sub style of the Nagara architecture too okay next ये से हार्ट उडा पके पकुची okay so guys here you can see the total picture कोटा कमे कहूची नॉर्दर्न स्टाइल टेंपल आपनकर केमिति थाए एंड साउदर्न स्टाइल टेंपल केमिति थाए ओके फॉर हियर द इमेज आपण मान देखि पारुथबे एमति पूरा आपनकर टॉप को पळेछि बट एठी देखंतु गोटे भांग हेछि देन एठी आपनकर गोटे पॉइंट अछि देन पुनी एमति आसी कि भांग हेछि हन नै को एंड एठी आपनकर छोटो मंदिर भी देखा को मिलबो ताको हमें मंडपस कहूचे ताको हमें कोन कहूचे दिस इज द नॉर्दर्न स्टाइल टेंपल एंड साउदर्न टेंपल रे आपण मानकर डायरेक्ट ता तळ टेंपल ता पूरा प्लेन थिबो माने गोटिए मेन टेंपल थिबा आउ किछि सब टेंपल देई कि आपण माने जिबे क्लियर होना नै म देखो बट एठी आपण माने देखिबे जदि कलिंग आर्किटेक्चर ले केमिति थाए ना फास्ट आपण माने गोटे ए टाइप रो मंदिर भीतर देई कि पसिबो मुख द्वार हम ता कहूचे तापरे छोटो छोटो मंदिर तापरे पुनी बड़ मंदिर ए फास्ट एंट्रेंस मंदिर ता हम कहूचे खाकरा देउळ हैला ता पाखरे जो छोटो छोटो मंदिर देई कि धीरे धीरे क्रॉस करिवो गोटे छोटो मंदिर थिबो तापर आउ टिके छोटो मंदिर हैला क्रॉस करी कि मेन मंदिर को जिवो से छोटो मंदिर को हम पीढ़ा देउळ कहूचे देन ठाकुर भगवान हमर जो घर रहउचंती हमें ताको गर्भगृह बोली कहूचे एंड ए गर्भगृहर मेन शीर्षटा ए शीर्ष पोर्शन को हमें कोन ना रेखा देउळ बोली कहूचे तो एटा रहउची आपनकर एक्जेक्टली आपनकर कोन मंदिर मानकर स्ट्रक्चर जोथरे खाकरा देउळ पीढ़ा देउळ गर्भगृह एंड रेखा देउळ मिसी की होंती कलिंग आर्किटेक्चर एतिके जिंस माइंड रे आखि रे पूरा जेमति पसि जिवा दरकार हैला जेमिति दूर को सुंदर झियो को देखिले ता छबिटा तम आखि आगे रही जाउची ठीक सेमिति एटा आपनको आखि आगे रहिबा दरकार केतिकिटा पार्ट ना वन भाबो गोटे सुंदर झियो को देखिलो तार चुट्टी रहिला हैला द खाकरा देउळ उफ केते सुंदर चुट्टी देन आसिला द पीढ़ा देउळ उफ केते सुंदर आखि ओके देन रहिला द रेखा देउळ उफ के सुंदर ओठो तार हैला देन आसिला द गर्भगृह उफ से टोटल सुंदरटा निजे बुझिला तो किछि भी करी मन रखो हैला चलो तमे काई कहूची तम माने झियोडा हम क्लास रे भलो ना तांको थोड़ा हम कहूची जोठी कहूची से मानको सब बाजिलान ठीक जगह रे आसा हो आसा नेक्स्ट the original chitrakars of the Pattachitra painting usually come from which district of Odisha मान तमे खुशी होगा कथा मैम बॉयज मान के सपोर्ट करछ तमे नारी कंप्लेन करूछ हे आसा राइट आंसर कोन अब क्विक जल्दी कुह टाइम वेस्ट करो नहीं लॉट ऑफ वर्क टू डू आफ्टर द एंडिंग ऑफ द क्लास
शिट ए तो ए प्रॉब्लम टा हुए आ So right answer कौन हबो यो? Very good. That is the Puri. Okay. So the original Pattachitra Chitrakars painters are the historically associated with the Puri district कोट को जगह कहितली रघुराजपुर and ए मते कहला पट्टचित्र को केबे आपनकर GI tag मिलिथिला मते कुह पट्टचित्र को केबे GI tag मिलिथिला क्विक Puri Pattachitra got the GI tag. Porida Babu, you are in the class, so I am expecting the right answer and quick from you. Jaldi. The original Chitrakaras. Kede Sangara Puri. Kebe hela Kede Sangara Puri. Kede Sangara Puri kebe hela. Yes, so that is in the 2008 रे आपनकर हेतिला and ए same 2008 रे आपनकर आउ गोटे GI tag मिलिथिला पूरी पाखो मते कुओ सेटा भी कोन थिला same 2008 रे आउ गोटे GI tag पाइछंती पूरी पाखरु so what will be that कोन हबो क्विक हाँ so आपनकर पट्टचित्र सहित पिपिली र चांदुआ भी same 2008 रे आपनकर GI tag पाइछि तो एटा को मन रखि दबो नेक्स्ट आसा so the Padma Vibhushan award was conferred on the Raghunath Mahapatra in which year for his contribution to the stone sculpture तो stone sculpture आपनकर रघुनाथ महापात्र ये भी रघुराजपुर रु ही बिलोंग करंती पुरी रु बट मते कोंतु ये रहउसन आपनकर कोन पत्थर रे खुदित करिकि जो ठाकुरंकर चित्र अंकन करिला हैला मते को ये को मसिया रे आपनकर पाइथिले पद्म विभूषण अवार्ड गोटे ढाबा मारो मने तो नथियो ढाबा गुडे मारो 12 13 सब मारुछ ना कि हो so right answer 2013 so Raghunath Mahapatra the legendary sculptor of the Odisha received the Padma Vibhushan in the year 2013 कोन ठाकुरंकर चित्र माने विभिन्न प्रकार भंगी शैली रे ठाकुरंगु पत्थर रे खोदित करिसंती सेथि पय से 2013 रे कोन पद्म विभूषण पाइछन नेक्स्ट हाउ मेनी रॉक कट केव्स आर देयर इन उदयगिरी केव्स कहले जल्दी हाउ मेनी रॉक कट केव्स जल्दी शिट यार को जल्दी को पंद्रह 16 17 18 सब मिसई मासे गोटे गोळे गाळे कि देइदा 30 35 खंड कहि दियो तो राइट आंसर कोन हबो ना 18 your right answer will be the 18 so the number of existing caves at the Udayagiri is 18 while Khandagiri has 15 so the local names of the existing caves are listed below numbered according to the like enumbering so एटा होची गोटे गोटे caves हैला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on ओके एमि जदि काउंट करिवो टोटल आपनकर खंडगिरी रे केते रहउची ना 15 whereas उदयगिरी रे 18 15 and 18 दिटा जिंसा मन क्लियर नेक्स्ट आसो the state of Mayurbhanj was integrated with Odisha in the year को जल्दी Hathigumpha inscription Brahmi script and the Prakrit language how the state of Mayurbhanj was integrated with Odisha like Mayurbhanj Bhanja dynasty under रे थिले भंज माने ताकू शासन करूथिले and last तक हमें कहि परिबा केबे आसिकी ओडिसा सहित मिसिले ना in the year 1949 the 1st of January 1949 and ए मयूरभंज पाई ही आपण माने मन रखंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ओडिसा को आसीथिले okay so tell me after the independence of the India कारण independence पर जदि पछरा गला को princely state ओडिसा सहित मर्ज हेची ताहाले मन रखिबो 1949 रे के मयूरभंज so Mayurbhanj state under the Maharaja Pratap Chandra Bhanjdev जदि पछरा गला किए at that time last पर्यंत आपनकर मयूरभंज को के शासन करथिले की थिले राजा ताहाले the name is Maharaja Pratap Chandra Bhanjdev एति मन रहिबो हन तो next आसा who was the first person from Odisha to receive Bharat Ratna award अच्छा ओडिसा रा फर्स्ट पर्सन किए थिले जे कि भारत रत्न अवार्ड पाइथिले मते कहला क्विक
जल्दी कुह आसीगले पंडित प्रवर कुह who was the first person from Odisha to receive Bharat Ratna award? That is the VV Giri, Biju Patnaik, Madhusudan Das or Hare Krishna Mahata. Very good. That is VV Giri. So the VV Giri was the first person from Odisha to receive the Bharat Ratna award in 1975. एतिके दिन मन रहिबो क्लियर ओके एंड की थिले ना कपूरी ठाकुर फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर से भी पाइथिले भारत रत्न सो लाल कृष्ण आडवाणी फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पीएम नरसिम्हा राव फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह एंड एम एस स्वामीनाथन एमाने सबु पाइछंती ओके नेक्स्ट इबा ओए मक्खी ओदिन सब दिन पळे आछी आसो सो धामरा इज माउथ टू द रिवर ऑफ व्हाट Dhamra is the mouth to the river of what? The Baitarani, the Brahmani, the Subarnarekha, or both. अरे both option देखले नहीं पड़ुचो आमे मधु बाबू को दबा कथा जी ओडिसा रे बहुत काम करिछ ओ आसा सो धामरा आपनकर कोन एंथुसियाजम आपन तांको मिली परिबो हैला मु प्रपोज करिवि एंथुमसली तांको पाई मिलिबा लागि Okay, next mother quote, Dhamra is the mouth to the river of what? The Baitarani, the Brahmani, the Subarnarekha are both A and B. So government option देखले तो मैंने नहीं पढ़ी वो. So Dhamra is the point where the rivers Baitarani and Brahmani both आसी के अपन करो कौन ना Bay of Bengal ले मिसी थांती है ना. Next आसा बोधोदायिनी published from Baleshwar in 1861. So 1861 रे बोधोदायिनी अपन करो कौन ना it was a what? It was a first Odia weekly newspaper, first Odia daily newspaper, first Odia magazine, first bi-monthly magazine. Option C बहुत मात्रा में मारा दमची first Odia magazine. How? So the first Odia magazine of the first magazine of Odisha was the Bodhodayini. It was published in 1861 from Baleshwar and it is being edited by Fakir Mohan Senapati. Fakir Mohan Senapati को बहुत पिला भूली जाती so याको मन रखियो. Next question. Which district was the first to have been separated from Sambalpur district? Jharsuguda, Devgarh, Bargarh, or none of these? पाखा पाखी सब मार दोथुओ ना कि पाखा पाखी सब लाउथुओ झारसुगुड़ा ना देवगढ़ कौन हबा राइट आंसर क्विक ऑप्शन 24 क्वेश्चन 24 देई कि दियो 26 कोड आसिला प्रिंस मनोज 24 रे त हमें अच्छे 26 कोन लिखि छडी 26 बी लिखि छ एंड ओडे बाडी हां so right answer apanakar kon habo obviously that is the Bargarh. So Bargarh was the first district to be separated from the Sambalpur in the year 1993. After that Jharsuguda and Devgarh were separately in the year 1994 after 1 year of the separation of the Bargarh from the Sambalpur district. So before these revisions the Sambalpur district also included the districts of Bargarh, Jharsuguda and Devgarh too. Am I clear? Next. Who among the following is the author of the poem Bandira Atmakatha? Bandira Atmakatha जेल थिला बेले लिखिदिले किए ना जिए कि 1909 मसीहा रे किए 1909 मसीहा रे सत्यवादी वर्ण विद्यालय करिथिले 1919 मसीहा रे समाज न्यूज़पेपर प्रतिष्ठा करिथिले तो किए हबा राइट आंसर क्विक वेरी गुड सो बंदिरा आत्मकथा उत्कलमणि गोपबंधु दास लिखिथिले एंड आपणकर स्वराज्य मानव जन्म अधिकार एहा बिने देश हुए छरखर अंगे निभाउछ केते की अवस्था अन्न वस्त्र आउ हेब की सस्ता तो एटा आपणकर बंदिरात्मकतार पंच लाइन थिला ओके एंड इट वाज रिटन बाय द उत्कलमणि गोपबंधु दास क्लियर नेक्स्ट इबा मते को द टॉलेस्ट पीक इज द मालिया रेंज ऑफ ईस्टर्न घाट इज मते व्हाट विल बी द टॉलेस्ट पीक पचारिची ईस्टर्न घाट रो तुरियाकोंडा देवमाली महेंद्रगिरी और फिर निजे मलयगिरी एठी ईस्टर्न घाट रेंज कथा पचारिची ईस्टर्न घाट रेंज कथा पचारिले ऑप्शन सी कोन हबो ने मैम निजे ओके माने पडुची मलयगिरी ही ना महेंद्रगिरी थिला सॉरी महेंद्रगिरी हैला सो द टॉलेस्ट पीक इन द मालिया रेंज ऑफ द ईस्टर्न घाट इज द महेंद्रगिरी विथ the elevation केते ना 15 मीटर जोटा कि आपनकर आफ्टर सेकंड हमें कहूचे आफ्टर द देवमाली परे जदि सेकंड हमें का को कंसीडर करूचे दैट इज योर महेंद्रगिरी जोटा कि गजपति डिस्ट्रिक्ट रे ओडिसा रो बिलोंग करूची नेक्स्ट क्वेश्चन मते देखो
Which of the following is a major spices producing spice produced in Odisha? मते कुआ कोटा में कहूचे ऑब्वियसली ओडिसा रो जीआई टैग जोटा पाइछि सेटा को जिबा ना कमेंट ऑप्शन को गार्लिक भी होउची अरे वाह हो तो गवर्नमेंट ऑप्शन देखला माने तमे ना किछि आखी बंद करिकि मारो तमन को कोन पुछेबी so according to the sources some major spices produced in Odisha including the turmeric ginger chili coriander garlic and the black pepper with turmeric being the particularly कोन prominent and आपनकर हळदी जीआई टैग पाइछि कंधमाल को ईयर रे मते को हळदी आपनकर जीआई टैग मिलिछि ताको को ईयर रे मते टिके कुह जल्दी तो ओडिसा रो किछि भौगोलिक लाइक आपनकर जीआई टैग पाइथबा जिंस आपनकर एठी मेंशन मु करिछि बट मते को टिके हळदी रो जीआई टैग को मसिया रे हेइथिला क्विक 2014 वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following national waterways is mostly in the Odisha ओडिसा रे गोटे आपनकर कोन ओडिसा रे नेचुरल वाटरवेज प्रेजेंट अछि ओडिसा रे नेचुरल वाटरवेज आपनकर प्रेजेंट अछि व्हाट वाज दैट और सॉरी व्हाट इज दैट कोन हबा राइट आंसर क्विक which of the following national waterways is mostly in Odisha national waterway like the national highway hame कहउचे सेमती NW is denoted as the national waterway is denoted as the NW this is a 1 3 4 or 5 the right answer will be your 5 so the national waterway 5 is mostly located in the Odisha कोठी आछे आपनकर नेशनल लाइक NS 5 आपनकर कोठी आसुची C आपनकर ए कोस्टल लाइन को हम रिलेट करछे दिस इज द नेशनल जोटा कि ओडिसा रे एठी हमकर प्रेजेंट रहछे एटा को हम कोन कहउचे दिस इज द नेशनल वाटरवे 5 हैला एंड सो ऑन जदी NS 6 आपन पछाय गला कोठी कहइबो कोठो हां NS 6 कहले कोन बुझिबो ना मैम द सेवन सिस्टर the chicken neck सेठी आपनकर NW6 प्रेजेंट अछि so and so on एटा सब मैप आपन को मेंशन कर देछि टिके ओवरलुक कर हैला नेक्स्ट आसा मते को which Odisha river is known for forming an extensive estuarine and mangrove ecosystem near its delta रे पचारि छि पुणे estuarine कथा पचारि छि and mangrove कथा पचारि देछि तो बैतरणी सुवर्णरेखा ऋषिकुल्या और इंद्रावती obviously your answer will be your बैतरणी river काहे के ऑप्शन बी आसिला को खुशी रे हां को खुशी रे आसिला ऑप्शन बी मन इच्छा ओडे मारुछ ऑप्शन किछि कहूनी बोली ना कि हां सो बैतरणी रिवर आपन रिलेट करिवो द मैनग्रोव जोन इन द भितरकनिका रीजन सपोर्टिंग द क्रोकोडाइल एंड द avian biodiversity हैला हां नेक्स्ट आसा which Odisha dance is also called the rumkar nacho कहा को हमें रूमकर नाच बोली कहूचे क्विक फर्स्ट मते कुह कहा को हमें रूमकर नाच बोली कहूचे पाइक डांस आपनकर फेमस हमें कहि परिबा कोठी ना खोरधा रे माने नहीं झुमर डांस एबे ही डिस्कस करिथिली छौ डांस कहिले मयूरभंज हने नहीं देन असला कोन महारी डांस राइट आंसर कोन हबो योर दिस इज द छौ डांस इज आल्सो कॉल्ड द रूमकर नाच छौ डांस को हमें अदरवाइज ताकू अलगा नार जानि छि दैट इज द रूमकर नाच एंड इज एन एंशिएंट मार्टियल आर्ट form that originated in the Mayurbhanj district of Odisha. It is a combination of the martial arts, tribal traditions and the folk dance with stories often inspired by the Ramayana and Mahabharata. So traditional mythological stories आपनकर एथिरे कुहा जाय ओके एटा को दर्शा जाय through the लोक नृत्य माध्यम ओके so this was all about your today's session and hope आपन मन को भल लागिथिबो ए क्लास and कहिबी जो माने भी ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करिनो डू सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट ओके एंड तो माने पीडीएफ आई रीड होउचो क्लास एंड रे याकू स्कैन करो टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो सेठी आपनकर एंड ऑफ द क्लास सब क्लास रो पीडीएफ राती रे मिल जाउछ ओके एंड आफ्टर दैट जो माने मो सहित कनेक्ट हेबा को चाहूछो गाइस सुदीप्ता जीके नेटवर्क को फॉलो करो सुदीप्ता सिमरन पंडा मोर पर्सनल अकाउंट मु सेठी स्टूडेंट्स मानन को रखे नाही तो को भी स्टूडेंट मते सेठी फॉलो कले आई विल नेवर एक्सेप्ट दैट तो
सेठी फॉलो न करके बेटर कि मते सुदीप्ता जीके नेटवर्क को फॉलो करो एंड इवन मु सेठी 24/7 कहला भलिया रहूची ऑनलाइन तो आपण मानक क्वेरी को सॉल्व करि परिबी इवन आई कैन टॉक विथ यू ओके बट मो पर्सनल अकाउंट को त माने रिक्वेस्ट पठाउछो एंड से पुणी 700 डिलीट करी पुणी एबे आहुरी 400 हे गलानी तो मु कोन करि परिबी सेति कि त मोर प्रोफेशनल अकाउंट को भी फॉलो करूना लोकंकर प्रॉब्लम भी सेया लोक माने टिके अलगा लोक मानकर लाइक पर्सनल लाइफ रे कोन चलुची सेडा देखिया को तांकर बहुत इंटरेस्ट रादर देन द पर्सनल लाइफ लाइक प्रोफेशनल लाइफ किछि भी तमान को किछि कहि परिबेनी तमान सब जाइछो 450 रु जाइछो वो आ कोन खबर सब भलो सब भलो तो बट मो कॉल रिसीव करिबेनी गायत्री तमे जदी काली कॉल करिछो कहूचो काली 3-4 टा एंतरे कॉल आसीतिला कहार कॉल मु जानिनी एंड ऑनेस्टली एतिकी टाइम भी नतला कि कॉल बैक करी कि पचारिबी की थिलो काहे की कॉल करथिला तो बेटर तमे आउ थरे कॉल करिवो उठे एंड गोटे थरे कॉल आसी कि रही गले भी मु भाबी कार मिस्टेक रे कॉल लागि देथिला कोन दरकार काहे कॉल बैक कर टिके नाही राका बहुत रहउछ ओके रॉबिनहुड ऑफिस एड्रेस कौन से स्टूडेंट को दिया जाऊ ना रादर कि सर मानकर ओल्ड स्टूडेंट्स जो माने अछंती से माने आस जाउछंती माने रुह ऑफिस से चेंज भी हेबार अछि तो नुआ ऑफिस हेले तमन को एड्रेस देला हैला चलो थैंक यू सो मच गाइस हैव ए गुड नाइट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ but first of all do prioritize your parents this would be your first priority no one else in the world you can see my eyes okay आखि रे पूरा नींद फुल अछि बस जाय माने जिबी ओके लाइक ब्लेजर फ्लेजर फोबाडीबी क्लास सरीबो बाकी लाइट फाइट ऑफ करिबी स्विच और किछि काम नै ओके एंड ऑफिस रो आसी कि पूरा फ्रेश हे जाउची कि मते क्लास सरला बेले का पुनी शीत दिन आसी गला ना माने मुहरे पानी मारी देला माने पुनी पळेबो नींद पळेबो बेटर के आसी पूरा फेस वॉश सरका करी फ्रेश हेई एंड यू वोंट इमेजिन मुबे मोरे नाइट क्रीम मारी कि तमने क्लास करूची कि मते आहुरी थरे नाइट क्रीम मारिया को पड़िबानी जाई खाली सोइबी बुझलो चलो थैंक यू सो मच गाइस हैव ए गुड नाइट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बट फर्स्ट ऑफ ऑल डू प्लान बाय बाय टेक केयर आई लव यू ऑल क्लास रे टिके प्रेजेंट हो सांग मानु टिके कुह एग्जाम सरी गला दैट डजंट मीन कि हमर प्रिपरेशन एठी एंड हेसिबो सेही भूल करूचो बोली तमे एते वर्ष लानी प्रिपरेशन करूचो हमर कंसिस्टेंसी ही नाही the consistency maintain ही करिवो ताहले त मानकर within 6 month within 1 year at least or at most कहिबी त मानकर जॉब हे या चलो बाय बाय माय डियर बच्चा पार्टी बाय बाय ऑल द बच्चेस एंड बच्चीस